Hello students, good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the world of plants. In this chapter, we will study about the parts of the plants, visible and non-visible, how the various parts of the plant useful to us, and what work the roots, stem and leaves do. Okay, in our previous chapter, we have read about living and non-living things. So हमको clear है कि living things क्या है and non-living things क्या है. Now in this chapter, we are talking about plants. So plants are living things like us. As we need food, air and water to grow, plants also need air, water, minerals, salts, etc. and good care to grow. A plant has different parts like roots, stem, branches, flowers, fruits, and each part of the plant has its own functions. So let us study about various parts of the plant and their functions. Parts of the plant is mainly divided into two groups, root and shoot. Okay, let us study. Here is an image of parts of a plant. Root and shoot. Now आपको with the help of arrow clearly mention है कि root क्या है and shoot क्या है. The difference between root and shoot देखो. Root, the part of the plant that is under or below the soil. Under or below means नीचे की side, नीचे जो है soil के, below or under that is root, and shoot that is which is above the soil and can be seen, जो हमें दिख रहा है और जो ऊपर है that is shoot. Now shoot consists of leaf, flower, fruit, branches, stem, etc. Okay, now again root is divided into two parts. Taproot, fibrous root. See, taproot क्या है and fibrous root क्या है? Taproot, a root having one main root and other smaller root branches coming out of it is taproot. Fibrous root, root in which a number of root branches grow from one single point at the base of the stem is fibrous root. देखो, I'll show you the image of taproot and fibrous root. See, this is an example of taproot and this is fibrous root. Taproot में क्या है कि one main root है. देखो, this is one main root and other smaller. ये सारी smaller root branches are coming out of it. And fibrous root, a root in which number of root branches from one single point. देखो, एक ही single point है और इसी में से number of root branches grow कर रही हैं. So this is the difference between taproot and fibrous root. Taproot के examples क्या हैं? Neem, mango, people, bean, etc. And examples of plants having fibrous roots are wheat, onion, rice, grass, etc. Now let us study the functions of root. The root fixes the plant firmly in the soil. Root fixes the plant firmly in the soil का क्या मतलब है कि जो root होता है एकदम पूरा अच्छे से plant को fix कर देता है पूरा soil के अंदर बहुत मजबूती से. Root helps the plant to absorb water and mineral salts from the soil. अब हम कोई भी plant grow करते हैं तो उसको वाटर तो करेंगे, वाटरिंग करते हैं ना प्लांट्स को, तो हम उसकी जड़ों में जो पानी डाल रहे हैं तो उन जड़ों में से वो पूरा प्लांट्स के तक पहुंच रहा है पानी. The root sends the absorbed water and minerals to the stem also. Stem पे भी सब जगह रूट के थ्रू ही पानी जा रहा है. Roots of some plants store extra food in them. आपने देखा होगा, even you have eat such type of fruits also, carrot, turnip, beetroot, radish, etc. देखो आपको यहाँ पे इसकी images भी दिखाए हुए examples के थ्रू कि जो इनकी roots होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, इनमें कुछ extra food store करके रखते हैं और वो हम ये सारी चीजें खाते भी हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है carrot, turnip, beetroot and radish. So these plants store some extra food. Now shoot, जैसे कि हमने shoot पढ़ा कि shoot is seen above the soil. हमें shoot कहाँ दिखता है? Soil के ऊपर. And it consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits.
So number one, we'll study first of all stem. The stem is the main part of the shoot system. Stem is the main part. All the other parts of plants like branches, leaves, buds, flowers, fruits, etc. grow on it. Stem क्या है? Main part है and बाकी branches, बाकी जो अदर पार्ट्स हैं टाटा ब्रांचेस लीव्स एक्सेट्रा वो उस पे ग्रो कर रहे हैं. ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ स्टेम. अब सभी प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं सेम तो नहीं होती. सम प्लांट्स लाइक कोकोनट, नीम, banyan etc. have hard, strong and woody stems. Woody stems called ट्रंक्स. आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं जैसे कोकोनट, नीम है, इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्राउन कलर की वुडी होती हैं, लकड़ी सी जैसी होती है, डंठल टाइप सा. उनको हम बोलते हैं ट्रंक्स. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक बनाना ट्री है, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. इनकी स्टेम्स किस कलर की होती है? ग्रीन स्टेम्स. और जो वुडी स्टेम्स है दैट विल बी द कलर इज ब्राउन. यस. नाउ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा है कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनको सपोर्ट चाहिए होता है सीधा खड़े रहने के लिए. Climbers and creepers like money plant, gourds and grapes etc. have soft and weak stems. इनकी जो stems होती हैं बहुत weak है. That's why they need support. ठीक है? They climb up taking support of the strong trunks. जो मजबूत stems है, जिनकी मजबूत trunks हैं, उनका support लेके ये खड़े रहते हैं सीधा. Now functions of stems क्या है? The stem supports and hold the plants upright. Stem support कर रहा है and सीधे hold the plants upright. It bear branches, leaves, buds, flowers and fruits. It carries water and mineral salt from the roots to the leaves. ये water भी दे रहा है leaves को. Food prepared by the leaves is transported or carried to different parts of the plant through the stem. अब ये stem के through जो भी खाना है जो leaves से बन रहा है वो बाकी parts of the plant को दे रहा है. देखो Here आपको यहाँ पे two images दिखाई हुई हैं. First one is water moving up in the stem. देखिए जो ये roots में यहाँ पे जो ये पानी है आपको पानी दिखाया हुआ है water moving up ऊपर की तरफ जा रहा है stem में in the stem. Now in this image food moving to all parts through the stem. इसमें जो food है आपका वो stem की मदद से सभी parts में food जा रहा है. Now सिमिलरली जैसे कि आपने रूट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हुआ था रूट्स में, सिमिलरली स्टेम्स ऑफ सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम. स्टेम भी अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है. सच स्टेम्स आर एडिबल और फिट फॉर ईटिंग और हम उन्हें खा भी रहे हैं. एग्जांपल्स देखिए पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ओनियन, गार्लिक एंड शुगर केन. Of these, potato, ginger, turmeric, onion, and garlic are underground stems. These are underground stems. देखो potato, ginger and sugar cane. अब इनमें हमें कोई पॉट नहीं चाहिए. These are underground. इसे हम बिल्कुल underground grow करते हैं. Now, important part, leaf. The leaf is the most important part of a plant because it is the place where food is prepared by the plant. अब leaf is the most important part. Leaf के through ही सारा खाना बन रहा है. Okay, let us revise our previous chapter also. हमने previous chapter में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? Chlorophyll, photosynthesis, stomata. तो हम now we will revise that part also. See, it is the process of photosynthesis. Water, chlorophyll, air, carbon dioxide, these are roots and sunlight. All these are the process of photosynthesis कि plants prepare their own food. इस process को क्या बोलते हैं? Photosynthesis. Now, the green leaves of the plants have a green coloring matter. Leaf green color की है, उसके अंदर से जो green color का matter निकलता है that is chlorophyll. एंड अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्या क्या चीजें उनको चाहिए होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
using carbon dioxide, air, chlorophyll and water to prepare their food. इस process को हम क्या बोलते हैं? Photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. सभी चीजों को इकट्ठा किया and this process is known as photosynthesis. Hence, इसीलिए leaves are called the kitchen or food factory of plants. Leaves ही अपनी parts plant के parts के लिए खाना बना रही है तो that is why leaves are called the kitchen or food factory of plants. The shape and the size of all leaves are not the same. अब आपने सारी leaves देखी हुई है, उनका जो shape होता है, size होता है, same नहीं होता. अब सपोज यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अगर हम पीपल की लीफ लेते हैं दैट इज बिग बट इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ रोज लीफ वो छोटी होती है सो साइज इज नॉट सेम बट द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम लेकिन हमें दिखती सेम है. सी the broad and flat part of the leaf is called a leaf blade. Each leaf has a main vein and side veins attached to it. These side veins bring water for the leaf. The leaf stalk is called the petiole. The surrounding part of the leaf is the leaf margin and the tip is called the apex. See, मैं आपको पहले structure of the leaf दिखाती हूँ. See, this is an image of leaf. ठीक है? अब ये एक big leaf है. See, first of all हम will start from this. जो ये पूरा टॉप है ऊपर का जो ये हिस्सा है दैट इज एपेक्स. अब जो ये साइड की जो ये चीजें हैं दैट इज लीफ मार्जिन एंड दिस सेंटर लाइन. इस सेंटर लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज मेन वेन. दिस इज मेन वेन एंड जो मैंने आपको बताया कि फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस दिस इज लीफ ब्लेड. ये आपका क्या है? लीफ ब्लेड. एंड दीज आर साइड वेन्स. ये क्या है? साइड वेन्स. और जैसे कि इस स्टेम से अटैच है ये हिस्सा है आपका दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ स्टॉक और इसको हम बोलते हैं पेटियोल. नाउ हियर इज एन इमेज ऑफ लीफ और ये स्टोमेटा. नाउ स्टोमेटा का को कैसे मैंने आपको उस प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं. There are many tiny pores present under the surface of the leaf. लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इससे होते हैं. These pores are called stomata. लीफ इनसे सांस लेता है. The stomata help in exchange of gases in the plants while breathing. So stomata are the tiny pores on the leaf surface that help plants in exchange of gases, that is breathing. Now functions of leaf क्या है? Green leaves make food for the plant. Plant के लिए food बना रहा है. The leaves give out oxygen during photosynthesis process. अब during photosynthesis के process में ये रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन. और ले क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो all other living things breathe in oxygen to stay alive. So plants purify, air को purify कर रहा है. As photosynthesis take place only in the daytime. अब photosynthesis के process में हमने पढ़ा था कि sunlight भी चाहिए तो obviously in daytime नहीं हो पाएगा कि daytime में वो leaf give out oxygen in the daytime. But at night में देखो वो क्या कर रही हैं? Leaves breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Leaves of some plants store the extra food in them. Roots ने extra food store किया, stem ने extra food store किया. Now leaf also is storing some extra food. See examples of leaves are देखिए cabbage, spinach, lettuce, mint, etc. अब suppose we have taken example of cabbage. अब हम गोभी लेके आते हैं घर में. उनकी जो ये leaves हैं अब वो जितनी भी हम leaves उतारते जाते हैं तो इसमें extra food store है. See spinach, lettuce और mint ये सारी जो leaves हैं ये extra food store करके रखते हैं. So today we will study this much part. In next class we'll continue. Okay, bye. Thank you.